breaking news since, as we've been telling you since this morning, the 12 cheetahs who took off from South Africa for Madhya Pradesh have arrived in Gwalior. The aircraft carrying the cheetahs landed, that's the Air Force, at the Gwalior Air Force Base. And the time we had told you was 10 a.m. It's just a few minutes past that. And we are hearing that the big cats have arrived. They will be released into the Kuno National Park. There will be a period of quarantine of a few days, after which they will be let out into a bigger enclosure. And these are 12 cheetahs who are from South Africa, and they are arriving in Gwalior, at the Gwalior Air Force Base in Madhya Pradesh. Earlier, there were 8 big cheetahs who were released. They were brought in from Namibia. The cheetahs, 7 males and 5 females this time around, will be released into their quarantine enclosures at the Kuno National Park in a short while from now. And Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan as well as Environment Minister Bhupinder Yadav will be present for the release of the cheetahs into their quarantine enclosures. And we are hearing now that the aircraft carrying the cheetahs from South Africa to the Gwalior Air Force Base have arrived. Earlier we had reported how they had already set off from and were expected to arrive at 10. It's just a few minutes past that now. They will first be released into the quarantine enclosures and after some time into larger enclosures where they can hunt for prey. And 10 quarantine enclosures have been created in the reserve for the big cats, officials have told us. And as per Indian wildlife laws, the animals are required to be kept in isolation for 30 days so that they can adapt themselves to the new conditions. And last year in September, 8 cheetahs from Namibia were flown into India. And Prime Minister Narendra Modi had released the big cats to the Kuno National Park. This was on his birthday, that's the 17th of September. And today, the 18th of February, another batch of the big cats, the cheetahs from South Africa, are arriving at the Gwalior Air Force Base in Madhya Pradesh. And the earlier 8 Namibian cheetahs are in their hunting enclosures and are reported to be in good health. And the hunting enclosures are, first the 12 cheetahs who are arriving in Madhya Pradesh today will first be released into the quarantine enclosures where they will be kept for 30 days in order to ensure that they are able to adapt to the new conditions, after which they will be released onto bigger enclosures where they can hunt for prey. These are 12 cheetahs, 7 male and 5 female, who are arriving in today. And joining me is Satya Vijay to take us through what's happening. Satya Vijay, we heard that that the big cats would be arriving at around 10 a.m. What are you hearing from your sources? Has the aircraft carrying them arrived in Gwalior? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज फिर एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि चीतों की जो दूसरी खेप है वो कूनो आज पहुंचना है। लगभग अब से कुछ मिनटों बाद ही जो 12 चीते हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं वो ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर से इन चीतों को इंडियन एयरफोर्स के विमान से कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ केंद्रीय मंत्री तो रहेंगे ही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो 12 चीते हैं इसमें 7 मेल और 5 फीमेल चीते हैं और इससे पहले 8 चीते पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाए गए थे और पीएम ने खुद उन्हें बाड़ों में छोड़ा था। इस बार जो 12 चीते हैं वो बस कुछ मिनटों में कह सकते हैं, जो टाइमिंग हमारे पास है उसके मुताबिक 10 से 10:30 के बीच में जो चीते हैं वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने थे दक्षिण अफ्रीका से, और वहां से करीब 1 घंटे का समय लगेगा चीतों को इंडियन एयरफोर्स के विमान से कूनो पहुंचने में, जहां पर कि इनको बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा और 1 महीने तक क्वारंटाइन करके वहां रखा जाएगा। And Satya Vijay,
when we talk about the preparations there at the Kuno National Park, we believe that quarantine enclosures have been made and the earlier cheetahs have adapted very well. They are now in hunting enclosures. So tell us more about how officials have prepared. What is the official statement on that? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले साल 8 चीते लाए गए थे वो मध्य प्रदेश और खासकर कूनो के एनवायरनमेंट में पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं और उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया था, जिस तरह से उन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया था, आम लोगों के लिए कूनो वहाँ पर लोगों को देखने के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया था, उसी फॉर्मेट को फॉलो इस बार किया जाएगा। जो 12 चीते जो आ रहे हैं उन्हें 9 बाड़ों में छोड़ा जाएगा, 1 महीने तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। पूरी तैयारियां केंद्रीय जो वन मंत्री हैं उनके निर्देश पर, भारत सरकार के निर्देश पर जो गाइडलाइन पिछले बार की थी उन सभी को इस बार भी फॉलो किया जाएगा। इवन क्या उन्हें खाना है, किस तरह से वो रहेंगे, मेडिकल चेकअप कब होना है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया। और चूंकि आप कूनो चीतों के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 8 चीते काफी अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं और उनका जो जीवन है वो कहना चाहिए वेल तरीके से चल रहा है, तो अब उतनी दिक्कत इस बार नहीं आनी है ये 12 चीतों को एडजस्ट करने में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चीतों का कुनबा है वो 8 से बढ़कर अब 20 हो जाएगा और इसकी हर तरह की तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। And well, as far as records tell us, Satya Vijay, this is a revival, and it's in fact we are hearing that this is the world's first intercontinental translocation project. Cheetahs disappeared from India in 1947 and they were declared extinct in 1952. So this clearly is a huge gift for our wildlife ecosystem. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विलुप्त हो चुकी प्रजाति थी ये भारत से और दक्षिण अफ्रीका, इससे पहले नामीबिया से 8 चीते आए थे, जो कि देश के लिए बड़ा एक सौगात थी, बड़ी गिफ्ट थी। और अब दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते आ रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि देश का नाम तो रोशन हुआ ही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन इससे बढ़ा है, क्योंकि लोगों में उत्सुकता है कि चीतों को वो कब कूनो में जाकर देख सकेंगे। हालांकि जो कि केंद्र सरकार की, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक फिलहाल आम लोगों के लिए उन बाड़ों को खोला नहीं गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि चीते जो हैं पूरी तरह से इस एनवायरनमेंट को, इस जो वातावरण से अपने अंदर शामिल कर लें, अडॉप्ट कर लें, उसके बाद ही आम लोगों के लिए खोला है। लेकिन बड़ा, जैसा कि आपने भी कहा कि विलुप्त हो चुकी प्रजाति थी, उसके बाद ये गिफ्ट मिला भारत के लिए और इसीलिए इनकी खास देखभाल की जाती है, हर उस प्रोटोकॉल को निभाया जाता है। प्रधानमंत्री ने जब पिछली बार जो 8 चीते बाड़े में छोड़े थे, जो नामीबिया से आए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर कहा भी था कि पहले एक वीवीआईपी से लेकर आम आदमी किसी को भी इन्हें देखने की अनुमति ना दी जाए, और वो इसलिए कि ये चीते पूरी तरह से एडजस्ट कर लें इस वातावरण को। हालांकि कूनो को इसीलिए चुना गया था क्योंकि कूनो और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया का जो एनवायरनमेंट है वो लगभग एक जैसा है, और इसीलिए सफलतापूर्वक ये जो 12 चीते लाए जाने हैं और इनकी कहना चाहिए कि जो प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हो या पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ हो, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं कि किस तरह से इनको वहां पर रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा बाड़ों में।